Good morning to class 9th. I welcome you in your biology class after a long time. I hope you all are fit and fine at your homes. So, my dear students, let us begin with the next chapter, the new chapter named as tissue. Up till now, in our previous chapter, we have discussed about the cell, its definition, and its complete structure in detail. Now, in this chapter, we will relate the previous knowledge that you have gained in the chapter cell, that how the different cells they are organized to form the tissue. So, let us begin with the introduction to the tissue. Now, in our previous chapter, we have discussed about the unicellular organisms as well as the multicellular organism. So, in simple terms, if we recall the unicellular and multicellular organisms definition, the unicellular organisms, they are the kind of organisms which are made up of only single cell or one cell. We have taken the example of amoeba. Okay, and here this single cell, it perform all the activities, whether it is excretion, whether it is respiration, whether it is digestion, each and every function it is performed by the single cell. But when we move on to the multicellular organisms, the word multicellular means that these kind of organisms, they are made up of many cells. Now here, as we have studied that many cells, they are grouped together and they are showing the property called as division of labor. Now, what is division of labor? We have already discussed in the previous chapter. Now, again, I am repeating the same. Division of labor means that different kind of cells, they are assigned with the specific function. So, this property of division of labor is also known as differentiation. So, this is the new term for you. So, what is differentiation? When the different cells, they perform particular, a specific function. Okay, when they get division of labor, that property of cell is termed as differentiation. So, what is differentiation? It is the property of the cells when the different cells, they perform a specific or a particular function. So, here in the multicellular organisms, cell, they group together to form the complex structure called as tissues. Let us take an example. When we have to build the house, okay, we take the fundamental unit to make the house, that is brick. Okay, brick is related with the cell. Brick is related with the cell. As our body's fundamental unit, the fundamental unit of living organism is cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो ये सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की. ओके, नाउ हेयर if we talk about the cells, they group together to form the tissue. In the same way, when we have to build the house, the bricks, they are put together to form the wall. So, we can compare the wall with the tissue. Different kind of bricks, they are together forming the complex structure called as wall, organized structure called as wall. In the same way, in our body, the different cells, they are grouped together to form an organized body called as tissue. Okay, I hope the relation is clear to you. So, now we will move on to the definition of tissue. Now, the meaning of word tissue is to weave. Silna.
यानी जब हम सेल्स को मिलाकर एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट एज टिश्यू। हम उसको टिश्यू बोल सकते हैं। सो इफ वी हैव टू डिफाइन द वर्ड टिश्यू, हाउ विल वी डिफाइन इट? Tissue means the group of cells which are either similar in structure or origin, or they are the group of cells which work together to perform a particular function, or here we can say the same kind of function. So in simpler terms, you can also define the tissue as the group of cells which can be similar in origin and structure, or they may perform the similar kind of function. So here diagrammatically I have shown that this is the single cell, and these cells like same structures, the cells having same structures, they aggregate, they combine to form a clump, to form a group which is called as tissue. So you are having example of so many tissues. I have here taken the example of blood. Blood is the example of tissue. It is the fluid tissue. Why I am calling it as fluid? Because it can flow. It is the liquid and it can flow. That's why blood is the fluid tissue. Now this tissue, blood, it is made up of different kind of cells. We all are familiar that blood, it is made up of red blood cells, white blood cells and platelets. So what is common in all these three? First of all, their origin is same. Their origin is same. They all are originated in the bone marrow. Bone marrow is the part of our longer bones where these kind of blood cells, they are formed. Secondly, they all are performing the particular function. This group of cell is performing a particular function, that is transportation. That is transportation. So by this we can say that blood is the example of tissue. I hope the meaning of word tissue is clear to you now by the help of this example. Now you have understood that what is tissue. Now my dear students, my question to you is, you have to tell me that what do these two pictures depict? Yeah, what kind of tissues they are? This is a tree, or I can say that this is the plant tissue. And this is snake, so it will have animal tissue. This tree will have the plant tissue and this snake will have the animal tissue. Now by comparing these two pictures, my question to you is that are the plant and animal tissues same or not? Is their need same or not? So here if we see the structure of plant and animal, so there are some kind of differences in these two kind of tissues. We can't say that plants and animal tissues, they are of same kind. So let us have the view that how this plant tissue, it is different from the animal tissue. So let us begin. The plant tissue or the structure of plant is much simpler as compared to the animal tissue. Animal tissue is having a complex structure. Okay. Now if we talk about the lifestyle of the plants, we know that plants, they are fixed to their position, they are stationary. Okay, the organisms which are fixed to their position, which cannot locomote, which cannot move from one place to another, they are called as the stationary organisms. Okay, but when we compare the plants with the animals,
Animals, we know they can show locomotion. They can show locomotion. They can move from one place to another place for the search of food, for the search of shelter, from escaping the enemies. They have to move from one place to another place. Now, my dear students, these plants, as they are stationary, the demand of energy in the plant is less as compared to the animals. Animals, as they have to move from one place to another place, the demand of energy is much higher. So they require more energy as compared to the plant cells. Now, the next difference among the plant and animal tissue is that in plants, maximum number of tissues, they are dead tissues. They are dead tissues. But in animals, on the other hand, maximum of the tissues present, they are living. This is again a major difference. दोनों के पास लिविंग और डेड टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास ज़्यादा अमाउंट में डेड टिश्यूज़ हैं, बहुत कम लिविंग टिश्यूज़ हैं. एंड एनिमल्स में केस इज़ रिवर्स. इन एनिमल्स मैक्सिमम ऑफ टिश्यूज़ दे आर living and very few they are dead. Now, as the plants, they are having the dead tissues, so these dead tissues, they just can perform the function like they can give the support to the plant, they can give the mechanical strength to the plant. But on the other hand, as the animals, they are having maximum living tissues, so these living tissues, they can perform the various varieties of functions, including all these kind of functions also. Okay. Now, the another major difference between the plant and the animal tissue is that plants, they grow throughout their life by dividing their cells. प्लांट के पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने सेल्स को थ्रू आउट लाइफ डिवाइड कर सकता है. And we can say that plants, they show indefinite growth. They can grow continuously throughout the life. But if we talk about the animals, you compare yourself with the plants. We are also one of the example of the animals only. अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या है, जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, यानी सेल्स की जो डिवीजन है दैट इज़ लिमिटेड. An animal, it can grow up to a particular stage of life. After that, in the animals, the growth, it stops. Now, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम, प्लांट्स के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट लाइफ ग्रो करता है, बट एनिमल्स के पास वो क्या नहीं है जिसके थ्रू वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो नहीं कर सकते. द आंसर इज़ दैट प्लांट्स, दे हैव a special kind of tissue called as the meristematic tissue. Called as the meristematic tissue. अभी हम इसी चैप्टर में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम इस टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. नाउ, in plants there is differentiation of dividing and non dividing parts. प्लांट्स के पास दोनों तरह के पार्ट्स होते हैं. कुछ पार्ट्स रेगुलरली डिवाइड करते हैं, कुछ पार्ट्स रेगुलरली डिवाइड नहीं करते. तो हमें ईज़िली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्लांट के ये वाले पार्ट्स हैं, लाइक जो टिप्स होती हैं प्लांट की, वो रेगुलरली डिवाइड करती हैं. ओके. और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो नॉन डिवाइडिंग होते हैं, लाइक बार्क ऑफ द ट्री. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द एनिमल्स, देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन between dividing and non dividing cells. हमें वहाँ पर डिमार्केशन नहीं होती कि कौन से सेल्स डिवाइडिंग, कौन से रीजन्स एनिमल में डिवाइडिंग है और कौन से नॉन डिवाइडिंग है. ओके. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. यू हैव टू लर्न दिस डिफरेंस. नाउ वी कम टू द
first kind of tissue, that is the plant tissue. Now we will discuss the plant tissue in detail. As I have discussed with you that plant tissue, it is having the capability to grow throughout their life. So I have discussed with you, they have the special kind of tissue called as the meristematic tissue, which is responsible for the continuous growth. Okay. On the other hand, the plants, they are having the second kind of tissues, which are called as the permanent tissues. This meristematic tissue and permanent tissues, they are different from each other. So in the simple words, we can say that plant tissues, they are divided into how many categories? Two categories, that is meristematic tissue and the permanent tissue. Now let us begin with the meristematic tissue. Now this meristematic tissue, it has the capability of dividing its cells rapidly. इसके पास, इस टिश्यू के पास जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने आप को रैपिडली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, बहुत जल्दी अमाउंट में डिवाइड कर सकते हैं, हाई स्पीड में डिवाइड कर सकते हैं. सेकेंडली, this meristematic tissues, they shows the property of totipotency. This is the new term for you. What is the term? Totipotency. Now what is totipotency? Totipotency is the capability of the single cell to produce the complete organism. हम एक ही सेल से पूरे का पूरा प्लांट बना सकते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें एक सिंगल सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं टोटिपोटेंसी. तो ये जो टोटिपोटेंसी की प्रॉपर्टी है, ये किसकी वजह से आई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से आई. बिकॉज ये जो सेल है, इसके पास एबिलिटी है कि ये अपने आप को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है. तो ये डिवाइड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा और फाइनली एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा. इज दैट क्लियर? नाउ on the other hand, if we talk about the permanent tissues, permanent tissues क्या होते हैं? They are not capable of division. Permanent tissues, they are not capable of division. They cannot divide at all. And here I will add one point, that meristematic tissues, when they lost the property of their division, they are converted into the permanent tissues. तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी permanent tissues हैं वो पहले क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही होते हैं. बट जब इनके पास से इनकी डिवाइडिंग प्रॉपर्टी छीन जाती है, they are converted into the permanent tissues. Okay. Now basically the meristematic tissues, they are having some special characteristic features which you should know. And again, this is very important question, that what are the different characteristic features of the meristematic tissues. Now what is meristematic tissue? The tissue which have power of division. ये वो टिश्यू है जिसके सेल्स के पास एक एबिलिटी है, एक पावर है, जिसमें वो अपने आप को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है. इज दैट क्लियर? सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, इट इज़ कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, यहाँ पर अब हमें पता लग रहा है कि इनको कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करना है. अब कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करने के लिए इनको कॉन्टीन्यूसली एनर्जी की सप्लाई भी चाहिए. ओके. सो अगर हम देखें तो कोई भी डेड सेल है तो वो तो डिवाइड नहीं कर सकता. तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हमें हिंट मिल गई कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होंगे? लिविंग सेल्स होंगे और एक्टिव सेल्स होंगे. ओके. Secondly, if we see the shape of the meristematic tissue, the shape can vary from oval
राउंडेड और पोलीगोनल शेप. आपने मैथ्स में डिफरेंट शेप्स पढ़ी हुई हैं. आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद ऑल दीज काइंड ऑफ शेप्स. Okay, now I have shown the diagram over here which is representing the meristematic tissue. So here you can see that the cells in the meristematic tissues, they are tightly packed or they are compactly present. जैसे कि फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई होती हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं, इसी तरह से ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स हैं, दे आर टाइटली पैक्ड. In between them intercellular spaces are absent. Intercellular मतलब दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता, because they are the cells, they are tightly packed. Okay, now each cell that is present in the meristematic tissue, it has thin wall which is made up of cellulose. As it is the plant tissue, we all know that cell wall in the plants, it is made up of cellulose. Now here in the cell there is a prominent nuclei present. Prominent nucleus मतलब हमें क्लियरली न्यूक्लियस विजिबल होता है. अगर हम माइक्रोस्कोप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखते हैं तो हमें ईजिली उसमें न्यूक्लियस दिखाई देता है. मैंने डायग्राम में भी देखिए आपको दिखाया हुआ है कि हर एक सेल के पास क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. नाउ another point. Now as I have discussed with you, the cells of the meristematic tissue, it has to divide rapidly. So there they require the large amount of energy. Large amount of energy is produced in mitochondria. ओके तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर डेंस होता है, रिच होता है. आप देखेंगे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ईच सेल इज़ हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म. ये जो मैंने बीच में डॉट्स दिखाई हुई हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग दी साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म डेंस होने की वजह क्या है? We all know that all kind of cell organelles, they are present in the cytoplasm. तो इस सेल को डिवाइड करना है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा. ओके, एंड these cells, they do not have vacuoles, or if they are having vacuole, the size of vacuole will be very very small. Now why so? Why these cells they don't have vacuole? vacuole का काम क्या होता है? फूड को स्टोर कर कर रखना. ओके अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लांट सेल्स को, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होना है. कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होना है तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए. एनर्जी चाहिए तो क्या होगा? क्या वो फूड को स्टोर कर कर रखेगा? नो, वो फूड को साथ साथ यूटिलाइज करेगा टू गेन दी एनर्जी. तो फूड वैक्यूल का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो इसलिए क्योंकि उसको स्टोर करना ही नहीं है फूड, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट हैविंग दी food vacuole. And last, they are having the great power of division. इनके पास capability है to divide the cells. And I have already discussed with you, meristematic cells, when they lost the property of the division, they became the permanent tissue. Okay, now in the next part we will discuss the different types of the meristematic tissues and their position. So there are basically different type of meristematic tissues, or 3 types of meristematic tissues based on the position. The first one is apical meristematic tissue, second one is intercalary meristematic tissue, and third one is lateral meristematic tissue. This diagram is again important. Okay, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ डिफरेंट मेरिस्टेम्स. ओके, मेरिस्टेम मीन्स द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. सो 3 पार्ट्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के. वन इज एपिकल, second one is intercalary, and third one is lateral. Okay,
This diagram is showing the position apical is related with the tip or apex. So apical meristematic tissue हमेशा टिप पे प्रेजेंट होगा. इंटरकैलरी वर्ड इज रिलेटेड विद द इंटरनोड रीजन. अभी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द इंटरनोड. अभी सिर्फ आप इसकी पोजीशन चेकआउट करिए डायग्राम में. थर्ड वन इज द लेटरल. लेटरल मीन्स साइड्स. लेटरल मीन्स साइड्स. तो ये वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप देख सकते हो, मैंने जो डार्कली शेड किया हुआ है, दैट इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट ऑन द साइड्स. दिस इज इंटरकैलरी प्रेजेंट beneath the node, and this is the apical part which is present at the apex. Okay, so let's see the type of these tissues. So apical meristematic tissue, it is either present on the tip of the root or at the tip of the stem. अब मैंने बोला कि ये स्टेम है, सपोज करो ये रूट है, रूट की टिप ये हुई, स्टेम की टिप ये हुई. अब यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है और इसका काम क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का? अपने सेल्स को डिवाइड करना. तो यहाँ से ये क्या करेगा? जब अपने सेल्स को डिवाइड करेगा तो इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट. यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये अपने सेल्स को डिवाइड करेगा, डिवाइड कर कर यहाँ से लेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ से रूट के सेल अपने आप को डिवाइड करेंगे. तो आप देख रहे हो ओवरऑल लेंथ ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज्ड. सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आपको पोजीशन पता होनी चाहिए और फंक्शन पता होना चाहिए. दैट इज सफिशिएंट. ओके, नाउ this second kind of tissue, it is the lateral tissue. It is the lateral tissue. This lateral tissue, as I have already shown you in the diagram, it is present on the sides of the plant, both the sides. So they are present at the lateral position. I have discussed the meaning of lateral. Lateral means sides of stem and root. अब साइड में प्रेजेंट है तो ये अपने सेल्स को इस तरह से डिवाइड करेगा. तो ये क्या कर रहा है? इट इज़ इंक्रीजिंग दी विड्थ ऑफ द प्लांट, इट इज़ इंक्रीजिंग दी गर्थ ऑफ द प्लांट. ये प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा. इज दैट क्लियर? सो दिस लेटरल टिश्यू, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गर्थ. ओके, नाउ कम टू द थर्ड काइंड ऑफ टिश्यू, third kind of meristematic tissue, which is based on the position, that is intercalary meristematic tissues. So this intercalary meristematic tissue, it is present at the base of internodes. अब आपके लिए internode word बिल्कुल न्यू टर्म है. So let us have view that what is the internode. I have drawn the diagram of a plant. अगर मैं इसकी स्टेम देखती हूँ तो मैं इसकी स्टेम को यहाँ पर इस तरीके से डिनोट कर सकती हूँ. यहाँ से एक लीफ निकल रहा है, यहाँ से एक लीफ निकल रहा है. तो वो पार्ट जहाँ से लीफ या फिर कोई भी ब्रांच ओरिजिनेट होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द नोड रीजन. व्हाट इज नोड? The part of stem where a new leaf is originated. Okay, that region is called as node. And what is internode? The distance between the two adjacent nodes. दो nodes के बीच का जो distance है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड. तो ये जो टिश्यू है, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इंटरनोड के नीचे. तो अब ये क्या करेगा? इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द ब्रांचेस इन द प्लांट. इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लीव्स इन द प्लांट. ओके, तो ये प्लांट को ब्रांचेस से, लीव से डेंस बनाएगा, घना दिखाएगा. सो दीज आर द काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर बेस्ड ऑन द पोजीशन, which are based on the position. Now let's move on to the next classification of the meristematic tissue, which is on the basis of their origin.
So on the basis of origin, meristematic tissue, it is classified as primary meristematic tissue and secondary meristematic tissue. Okay, so on the basis of origin, meristematic tissue is of two type, and on the basis of position, it is of three types. Okay, so let us begin with the meaning of primary meristem. Primary word means सबसे पहले. So they are formed during the origin from the beginning of the embryo. जैसे ही प्लांट एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है उसी टाइम पे ये टिश्यू बन जाता है प्लांट्स में, तो वहाँ पर ये प्राइमरी पार्ट्स फॉर्म करता है. ओके, कौन से पार्ट्स फॉर्म करेगा? प्राइमरी पार्ट्स किसी भी प्लांट के, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ग्रोथ. ओके, प्राइमरी ग्रोथ मतलब जो लेंथ में इंक्रीज करेगा. तो ये रूट टिप और शूट टिप बनाने में हेल्प करेगा. लाइक इट इज़ एग्जाम्पल इज एपेक्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स. ये सारे के सारे प्राइमरी पार्ट्स हैं प्लांट के. तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पार्ट्स बनाएगा. ओके, सो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ, it is called as the primary growth. Now we come to the second kind of meristematic tissue based on the basis of origin, that is the secondary meristematic tissue. Now जब प्लांट का प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, then comes the secondary meristem. It appear when the basic primary growth is completed. जब प्लांट की मैक्सिमम लेंथ इंक्रीज हो गई है उसके बाद उसमें किसका रोल स्टार्ट होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रोल स्टार्ट होता है. ये ज़्यादातर परमानेंट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है. ये ज़्यादातर किस में दिखाई देगा आपको? परमानेंट टिश्यू में. इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम. यानी इसका एग्जाम्पल कौन सा टिश्यू आ गया? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया. और प्राइमरी के एग्जाम्पल हो गए ये दोनों, यानी एपिकल और इंटरकैलरी ये प्राइमरी ग्रोथ शो करते हैं, और लेटरल मेरिस्टेम इट शोज द सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, अब ये जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ये प्लांट की गर्थ बढ़ाता है. ओके, तो that is the secondary growth, that is termed as the secondary growth, that is increase in the girth. तो अब I hope कि आपको पता लग गया है what is the primary growth and what is the secondary growth. Primary growth means increase in length and secondary growth means increase in girth. So example of the secondary meristem is phloem, that is the bark, cambium, that is the bark of the tree. So that was all about the meristematic tissue and its classification. Okay, so if we talk about the functions of the meristematic tissue, so what are the different functions? They are actively dividing parts, so they are helping in the division of the plant parts. They are responsible for the primary and the secondary growth. Okay, and they are helping in the production of wood. क्योंकि ये जो गर्थ इंक्रीज हो रही है, ये जो बार्क है, ये जो गर्थ है, ये जो सेकेंडरी कैम्बियम है, ये क्या करेगा? वुड रीजन बढ़ाएगा, वुड पार्ट बढ़ाएगा. एंड इफ़ there is any kind of injury or any kind of wound in any part of the plant, तो वो heal किसकी वजह से होगा? इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होगा, बिकॉज ये डिवाइड करेंगे रैपिडली, और डिवाइड करने से क्या होगा? जो भी सेल्स इंजर्ड हुए हैं वो रिकवर कर जाएंगे. सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टॉपिक क्लियर हो गया है. थैंक यू.